Hello and welcome to my new YouTube channel Anwesha Ghosh Academy, that is a free and enjoyable online tutorial for the school students belonging to classes 6 to 12 of different boards with different subjects, but special emphasis on class 6 to 10 for CBSE students, science, the entire science group, and for ICSE, West Bengal and other, biology and chemistry, and for classes 11 and 12, biology for all boards and NEET examination. Let's start the discussion on the chapter of biology, sexual reproduction in flowering plants. All of the discussions will be continued part by part. Today we will discuss the part 1, and by the way, this chapter is under class 12 syllabus from all boards, plus your NEET syllabus will be covered. So let's talk about this. First of all, what do you mean by sexual reproduction? A very common term. You are listening this term from the very beginning of your secondary standard. Sexual reproduction. What is happened in this phenomenon? Fertilization occur. Fertilization occurs. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन क्या? द फ्यूशन between two gametes or cells. In plants, the two gametes or sex cells are called as male gamete. Male gamete produced by male reproductive system, male gamete, and the female gamete is called female gamete, is called egg or ovum. And can you tell me what is the speciality of the gamete of each the gamete cell? They are diploid. They are diploid or haploid? Yes, they are haploid. Haploid in nature. The gamete cells are haploid in nature. And what do you mean by this term haploid? ऐसे तोड़ के समझना पड़ता है बेटा, चाहे वो जूनियर क्लासेस का भी हो या हायर क्लासेस. सभी बड़े बड़े चैप्टर को हम ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट समझाएंगे, ताकि आप लोगों के पूरे टेक्स्ट बुक और एडिशनल नीट सिलेबस सभी बहुत ही कम टाइम में सब कुछ कवर्ड हो पाए और एकदम थरली कवर्ड हो जाए. ये हैप्लॉइड सेट का मतलब है यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है. देखो थोड़ा साइड दे रही हूँ, आई थिंक विजिबल. इधर से लिख रही हूँ. देखो, having single
set of chromosome. Having single set of chromosomes, very very important term. तो diploid यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम से कैसे हैप्लॉइड और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस्ड होगा? थ्रू रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड मियोसिस. अब इधर में लिखेंगे तो देख नहीं पाओगे, तो ऊपर इधर लिख रहे हैं, तो एडजस्ट करके देख लेना. तो 1 के बाद देखो 2 कहाँ लिख रही हूं? Number 2, they are produced by the rather to write like this, from the produced from the diploid or 2n spore mother cells in case of plants. ठीक है, स्पोर मदर सेल्स ये एनिमल सेल में नहीं रहता है, ये प्लांट सेल के बारे में बोल रहे हैं. इन प्लांट्स by meiosis. Meiosis, that is a reduction division. ठीक है, तो ये हैप्लॉइड को डिप्लॉइड को अगर 2n के तौर से हम लोग इसको प्रेजेंट करें, एक्चुअली 2n नहीं, इसको 2x बोलते हैं, खैर छोड़ो, ये सब जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ाएंगे. तो हैप्लॉइड को n से हैप्लॉइड डिनोटेड होता है. तो ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट. इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट इवेंट्स के अंदर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को बोलेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज टुडेस डिस्कशन. सो लेट्स प्रोग्रेस. तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक काफी ही बड़ा बायोलॉजिकल प्रोसेस है. तो उसको छोटे छोटे इवेंट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, और साइंटिस्ट ऐसे ही डिवाइड किए हैं. तो द होल process of sexual reproduction in flowering plants can be divided into three main events. Number 1, pre-fertilization events. Pre-fertilization. And you have understood about fertilization or recapitulated this discussion. And pre-fertilization events मतलब क्या होता है? fertilization होने से पहले जो होता है. तो इसके अंदर फिर कुछ ऑर्गेन्स का स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा. स्ट्रक्चर्स मतलब किसका, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है, उसमें ये सब पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस. वो क्या क्या है, जब ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी तब उसमें आ जाएगा. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के टाइम में माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे ही जो मेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ेंगे. फिर फीमेल गैमेट एक कहाँ में प्रोड्यूस्ड होता है, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है एम्ब्रायो सैक, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर पढ़ना है, कुछ इवेंट्स को पढ़ना है. ठीक है, ये जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ये सब. फिर फंक्शंस पढ़ना है. ठीक है, ये सब पार्ट वाइज डिस्कस करके पढ़ाऊंगी ताकि सब कुछ आसान हो जाए. फिर देखो, डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है. अब कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो जब पढ़ाऊंगी देन यू विल बी अंडरस्टूड. एंड द थर्ड इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, सीड्स, okay, endosperms, they are produced. So their structures as well as functions will be studied as well.
Now starting with the event 1, elaborate discussion will be started. Event 1, pre-fertilization events. So already I have discussed that the this event takes place before fertilization. Okay, so taken place before fertilization. कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है जनरली? The common phenomena that happen under these events, like some striking hormonal, that means plant hormonal, obviously, hormonal and structural changes occur in plant reproductive organs. फिर नंबर 2, डिफरेंशिएशन यानी कि अलग होना. डिफरेंशिएशन and development of plant reproductive organs take place from the vegetative body parts of plants. Very very important term. सुनने में लगता है कि मैम की क्यों इतने तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, क्योंकि हम सभी ये सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर या कोई भी पर्सन तुमको थोड़ा डिटेल्स में पूछे तो इसका तुम नॉलेज रहने के बावजूद भी तुम ठीक से आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक सही से टर्मिनोलॉजी को चूज नहीं कर पाओगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो नॉलेज है, लेकिन हमारे जूनियर क्लासेस में ये सब जो पढ़ते थे हम, जनरली उसका वेग नॉलेज रहता है, नॉट अ क्लियर नॉलेज. तो इसको थोड़ा इलाबोरेट करके ही इसीलिए बोल रहे हैं तोड़ तोड़ के. तो देखो, जो वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स जो है, ठीक है, यानी कि वो प्लांट और वो मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट बॉडी में सेम रहता है, डिप्लॉयड बॉडी पार्ट्स. तो वहां से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेपरेटेड हो जाता है. माइक्रोस्पोरेंजियम इन केस ऑफ मेल प्लांट बॉडी और मेल प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एम्ब्रायो सैक इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, फिर वहां से क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह. अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा के माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रोसीड करेंगे. नाउ द फर्स्ट इवेंट, pre-fertilization events, further categorized into the 4 different sub-events. The sub-events are Number 1 sub-event, pollen grain formation. Pollen grain formation. What do you mean by pollen grain will be discussed just a few minutes later. Under pollen grain formation, we have to study 2 major natural phenomena that are
microsporogenesis and microgametogenesis. Always remember, this term genesis means to produce a new thing. Generation, okay, production. Micro, the term is related to male body parts. That means this phenomenon is found in male reproductive plant parts or male reproductive world. Now, sub-event 2, that is embryo sac formation, similar to like this, but this takes place in female reproductive world. Embryo sac formation. Under this, we again have to learn these similar two types of processes. Some sporogenesis event and another gametogenesis event, but not micro. In the case of the female plant parts, we use the term mega instead of micro. ठीक है, तो यहाँ पे मेगा sporogenesis and mega gametogenesis takes place in female reproductive world or part of plants. अब ये मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स ये सब क्लास 11 में पढ़े थे इन डिटेल्स, और छोटे छोटे क्लासेस से तो पढ़ते ही रहते थे। खैर 11 के डिस्कशन, 11 के लेक्चर्स भी रहेगा बाद में। अब थर्ड सब इवेंट देखो, पॉलिनेशन। थर्ड सब इवेंट जो है दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, ये मेल और फीमेल दोनों से ही जुड़े हुए हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, वहां से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड होगा। माइक्रोस्पोर से माइक्रोगैमेट्स और मेल गैमेटोफाइट और मेल प्लांट गैमेट बियरिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन इधर से हुआ। और फिर नंबर 2 जो पोलन ग्रेन के बराबर फीमेल में है, एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन में एम्ब्रायो सैक तो ओवारी में रहता है, लेकिन पॉलिनेशन में जिसका फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का, दैट इज विदिन पिस्टिल। हाँ, पिस्टिल में जो स्टिग्मा रहता है, हेड स्टिग्मा, उसका यहाँ पे बातें आएगा। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके पहले स्टिक करेगा स्टिग्मा में। सो व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स द transference. The pollination means the process of transference of pollen grains from anther onto stigma. ठीक है, तो पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा, वो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन और फाइनली पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन यानी कि पॉलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोगैमेटोफाइट,
तो ये पॉलिन के साथ पिस्टिल और कार्पेल, उसका जो स्टिग्मा, उसका जो इंटरैक्शन, वही इंटरैक्शन है द फोर्थ सब इवेंट में। फोर्थ सब इवेंट क्या है? पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो इसको ही एकदम सब इवेंट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके पूरा ये प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। काफी ही ये लेंथी चैप्टर है, इसीलिए ही छोटे छोटे करके इसको डिस्कस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म pollen grain? Already discussed, that is the male gametophyte. Male gametophyte. The term gametophyte means the plant parts bearing the gametes. So in case of male gametophyte, the male plant body bearing the male gametes. Okay, and from where male gametophyte, that is the pollen grain, are produced? The arrow sign is upward. Okay, because from this chapter I am writing, this structure I am writing, from this structure the male gametophyte will be produced from microspores, and microspores in turn are produced from microsporangium. Sporangium means a sac-like structure. So microsporangium seen in male reproductive wall of plant within anther. एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है। तो एक चेन सिस्टम है, इसके अंदर ये, फिर उसके अंदर में जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फिर कुछ इवेंट्स, फिर वहां से और कुछ, ऐसे चेन सिस्टम में होता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम से जो माइक्रोस्पोर्स, उस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर से जब मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन, इसका प्रोडक्शन होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजियम इन प्लूरल, एक माइक्रोस्पोरेंजियम हो तो माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर, प्लूरल हो तो माइक्रोस्पोरेंजिया। गड़बड़ मत करना, सभी गड़बड़ हो जाता है। सीधा सीधा इजी ऐसे बोलते बोलते एक आंसर स्क्रिप्ट में हम लोग देखते हैं कि टर्म सब गलत लिखे हो। ठीक है, क्योंकि फॉर हैविंग द वेग कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहता है लोकेटेड विद इन एंथर, और बेटर टू से at anther lobes। एंथर में ना लोब्स रहता है, जनरली बाइलोब्ड होता है एंथर, फिर वो लोब में और फिर दो दो कॉर्नर ऐसे ऐसे रहता है। बाइलोब्ड एंथर जो होता है, हर एक लोब में दो करके माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ बाइलोब्ड एंथर। तो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है बाइलोब्ड एंथर, 1/2 में 2 फिर 4, ऐसी कंडीशन को टेट्रा 4 स्पोरेंजिएट और टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर से कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोडक्शन होगा, उसका स्ट्रक्चर वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, छोटे छोटे करके बोलेंगे। और बोली हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे लोकेटेड है? विद इन एंथर, एंड बेटर टू से एट एंथर लोब्स। ठीक है, फिर द स्टडी ऑफ
pollen grain formation begins with the understanding of structure of microsporangium. तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है उसको इलैबोरेटली समझना है. एक ही वीडियो पब्लिश करूंगी नेक्स्ट डे. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. पूरे डिस्कशंस का एक समराइज्ड फॉर्म शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट्स में आप लोग देख पाओगे. वहां पे पूरे जो डिफरेंट बोर्ड वर्क्स डिफरेंट टाइम में मैं की हूं इस वीडियो के ऊपर, उसका ही एक फाइल बना के उसका स्क्रीन शेयर करके एक समराइज्ड डिस्कशन आप लोगों को मिल जाएगा. आज के लिए एक, फिर पार्ट बाय पार्ट ऐसे ऐसे डिफरेंट समराइजेशन फॉर्म भी शॉर्ट्स में मिल जाएगा. सो आई होप यू ऑल हैव वेल अंडरस्टूड. इफ यू लाइक माय teaching video, this free teaching video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, and please share all of these teaching videos with your friends, families and your teachers also. Till then, bye bye, take care.